रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Conceptual questions Q1. The atomic number of one particular isotope is equal to its mass number. Which isotope is it? क्वेश्चन 1 में ये कहा गया है कि the atomic number of one particular isotope is equal to its mass number. Which isotope is? एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक आइसोटोप ऐसा है कि उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर वो एक है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? इसे हम ए से शो करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम जेड से शो करते हैं। अब एक एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे हम जिस तरह ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखते हैं और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट का आइसोटोप है जिसका ये जो Z है और ये A आपस में इक्वल है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक को प्रोटियम कहते हैं, दूसरे को ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रिटियम। इस प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 1 है। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए इसको हम 2 लिखते हैं। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे 3 आते हैं। प्रोटियम हमारे पास हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें A और ये Z ये आपस में इक्वल है और दोनों 1 है। A क्या है? ये एटॉमिक नंबर है और Z जो है ये मास नंबर है। Answer. The mass number of an atom is equal to the sum of its protons and neutrons. The atomic number is equal to the positive charges in the nucleus of the atom. All atoms except hydrogen have mass numbers that are more than their atomic number. The hydrogen atom has 3 existing natural isotopes. These are hydrogen 1 called protium, hydrogen 2 called deuterium and hydrogen 3 called tritium. Only one of these 3 isotopes is protium. The mass number of hydrogen 1 is 1 and its atomic number is also 1. Question 2. Which is more likely to expose? A film kept in a cardboard box, alpha particles or beta particles? Explain. अब दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। यहाँ पे एक बॉक्स है कार्डबोर्ड का और इसके अंदर एक फिल्म पड़ी है, इसको फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। अब ये 2 रेडिएशन बाहर हैं, तो अल्फा में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। ये हमारे हाथ से भी नहीं गुजर सकता और ये कुछ सेंटीमीटर दूर जाके गिर जाता है क्योंकि ये हैवी है। बीटा पार्टिकल ये असल में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस है। न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ के अपने आप को प्रोटॉन में शामिल कर लेता है और ख़ुद बीटा पार्टिकल एमिट करता है। तो ये जो बीटा पार्टिकल है इसका साइज इलेक्ट्रॉन के इक्वल है और इसकी पेनिट्रेशन पावर एल्यूमिनियम के एक फॉइल से भी ये गुजर सकता है, एक बारीक से चादर से भी गुजर सकता है एल्यूमिनियम के। इसलिए ये जो रेडिएशन है बीटा रेडिएशन ये इस बॉक्स के अंदर जा सकती है। तो ये जो फिल्म है ये इस बीटा पार्टिकल से इफेक्ट हो सकती है लेकिन अल्फा पार्टिकल से इफेक्ट नहीं होगी, इसलिए ये फिल्म इस बीटा पार्टिकल के लिए एक्सपोज्ड है, यानी जाहिर है। ये जो बॉक्स है ये इसके
लिए कोई रुकावट नहीं है। Answer. Alpha particles are heavy. They consist 2 protons and 2 neutrons. They have low penetrating power. They affect the photographic plate. Beta particles are emit from nucleus. They affect a photographic plate and their effect is greater than those of alpha particles. They can penetrate through large thickness of matter. So film placed in cardboard is more exposed to beta particles as compared to alpha particles. Question 3. Is it possible for a form of heavy hydrogen to decay by emitting an alpha particle? Explain. क्वेश्चन 3 में है कि क्या हाइड्रोजन का जो हैवी आइसोटोप है वो अल्फा इमिट कर सकता है, अल्फा डीके उसमें हो सकती है। तो देखें, अल्फा में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, ये अल्फा पार्टिकल है। हाइड्रोजन का जो सबसे हैवी आइसोटोप है वो ट्रीटियम है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन हैं और 1 प्रोटॉन है। तो ये हमारे पास अल्फा इमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फा में तो हमारे पास 2 प्रोटॉन भी हैं और इसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन है, इसलिए ट्रीटियम सिर्फ बीटा डिके कर सकता है। इसलिए ये जो हैवी हाइड्रोजन है ट्रीटियम, इसमें सिर्फ बीटा इमिशन हो सकती है। Answer. An alpha particle is made up of 2 protons and 2 neutrons bound together, which is the equivalent of a helium-4 nucleus. Tritium, hydrogen-3, is the heaviest hydrogen isotope, having 1 proton and 2 neutrons, so it is impossible for hydrogen to decay by emitting an alpha particle. Tritium, hydrogen-3, is a good example of an element that undergoes beta decay. Therefore, a hydrogen-3 atom undergoing beta decay becomes a helium-3 atom. Question 4. Different isotopes of a given element have different masses but same chemical properties. Explain why chemical properties are unaffected by a change of isotope. क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसकी क्या वजह है? इसका आंसर ये है, एक जैसे एटम, एक ही एलिमेंट के जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन भी है और 6 न्यूट्रॉन है। एक कार्बन के आइसोटोप में 7 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन वाला आइसोटोप भी है, लेकिन सब में 6 प्रोटॉन्स हैं। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इस न्यूट्रॉन के कम या ज़्यादा होने से केमिकल प्रॉपर्टी पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इलेक्ट्रॉन डिटरमिन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन डिटरमिन करते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स डिटरमिन करते हैं, या हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसी एटम में सेम होते हैं। Answer. All atoms of the same element have the same number of protons, but some may have different numbers of neutrons. For example, all carbon atoms have 6 protons, and most have 6 neutrons as well. But some carbon atoms have 7 or 8 neutrons instead of the usual 6. Atoms of the same element that differ in their numbers of neutrons are called isotopes. Many isotopes occur naturally. Different isotopes of an element generally have the same physical and chemical properties.
That's because they have the same numbers of protons and electrons. Chemical properties are all determined by the electrons, and the number of electrons you have is determined by the charge of the nucleus, protons. Question 5. What fraction of a radioactive sample has decayed after 2 half-lives have elapsed? क्वेश्चन 5 है कि आफ्टर 2 हाफ लाइफ हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो कितना रह जाएगा। देखें, अगर हमारे पास ओरिजिनली एन नॉट हमारे पास एक सैंपल है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ अमाउंट लेफ्ट, ये अब वो अमाउंट लेफ्ट कितना रह जाएगा, 1/2 ऑफ एन नॉट। ओरिजिनल का आधा रह जाएगा, आधा डिके हो जाएगा। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ ये जितना रहता है, यानी जो आधा रहता है, इस आधे में से आधा जो है वो रह जाएगा। तो 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ एन नॉट, तो कितना रह जाएगा, 1/4 ऑफ एन नॉट, चौथा हिस्सा रह जाएगा। तो डिके कितना होगा, ठीक है, टोटल आप इसको 1 कंसिडर कर लें कि हमारे पास एज ए होल 1 है। तो 1 में से 1/4 माइनस करें, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 1s आर 4 एंड 1, 3/4 डिके हो जाएगा और 1/4 रह जाएगा। अब अगर आप एक एग्जाम्पल से समझ लें कि हमारे पास 1000 पार्टिकल है, तो इसमें से कितना डिके हो रहा है और कितना रह जाता है। तो देखें, डिके जो होगा वो 3/4 ऑफ द ओरिजिनल वन होगा और रह कितना जाता है, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वन। तो अगर आप 1000 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 24, 5s आर 20 एंड 0, और फिर 250 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 750 पार्टिकल ये डिके हो जाएंगे और 1/4 ऑफ द 1000, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, ये 20, यहाँ पे 2 आ जाएगा 20, 4 5s आर 20 एंड 0 250 पार्टिकल रह जाएंगे। The answer is, let's suppose we have the number of nuclei present at time t is equal to 0 is n is equal to n naught. After 1 half life, the amount left n is equal to 1/2 n naught. After second half life, the amount left n is equal to half of n naught is equal to 1/4 n naught. Hence, after 2 half-life, 1/4 of the original nuclei left and 1 minus 1/4 is equal to 3/4 has decayed. Take an example. If we have 1000 nuclei at present, after 2 half-life, 1/4 multiply 1000 is equal to 250 nuclei are left, and 3/4 multiply 1000 is equal to 750 have decayed. 6. Can carbon-14 dating give the age of fossil dinosaur skeleton? Explain. क्वेश्चन 6 है कि कार्बन 14 से हम डिफरेंट ओल्ड जो डेड एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, उनकी एज फाइंड करते हैं। तो क्या हम डायनासोर की एज कार्बन 14 की मदद से फाइंड कर सकते हैं? कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है। जब 2 हाफ लाइफ गुजरेंगे तो कितना टाइम गुजर जाएगा, 11,460 ईयर्स गुजर जाएंगे। क्योंकि इंसानी बॉडी में ये जो कार्बन 14 है ये बहुत कम मिकदार में, कम रेशो में मिलता है, और जब एक बॉडी डेड हो जाती है तो फिर नया कार्बन 14 नहीं बनता है। इस वजह से अगर 40,000 ईयर 50,000 ईयर गुजर जाए तो फिर
ये कार्बन 14 का उस बॉडी में मिलना बड़ा मुश्किल है, और हमें पता है कि डायनासोर लाखों साल पुराने हैं, इसलिए कार्बन 14 की मदद से हम डायनासोर के फॉसिल की एज को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंट और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करने होते हैं, जिस तरीके से पोटाशियम है, बेरिलियम है, इसकी हाफ लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में है। इस वजह से हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। Answer. Carbon-14 has a half-life of 5,730 years, meaning that 5,730 years after an organism dies, half of its carbon-14 atoms have decayed to nitrogen atoms. Similarly, 11,460 years after an organism dies, only 1/4 of its original carbon-14 atoms are still around. Because of the short length of the carbon-14 half-life, carbon dating is only accurate for items that are thousands to tens of thousands of years old. Dinosaurs of interest are much older than this. Geologists must therefore use elements with longer half-lives. For instance, potassium-40 decaying to argon has a half-life of 1.26 billion years, and beryllium-10 decaying to boron has a half-life of 1.52 million years. Geologists use these radioisotopes to give age of fossil. Short answer: no. Since the half-life of C14 is 5,730 years, you can't use it to accurately date something that is millions of years old. All that the carbon dating will tell you is that the fossil is too old for carbon dating. Question 7. Some food is with gamma radiations to kill bacteria. Why is there not a concern that people who eat such food might be consuming food containing gamma radiation? क्वेश्चन 7 में है कि अगर हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए गेमा रेज यूज़ करते हैं तो गेमा रेज तो बहुत ज़्यादा फैटल है, बहुत ख़तरनाक है, तो फिर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये जब उन खुराक में से गुजारी जाती है तो वो वहाँ ठहरती नहीं है, बल्कि उसमें से निकल जाती है। इसलिए ये खुराक जो है खाने के काबिल है और इसमें कोई ऐसे असरात नहीं होते जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो। Answer. Gamma radiation is a form of electromagnetic radiation, just like radio waves and visible light, only much more energetic. They pass right through the food and leave no direct contamination. It's so useful to us in terms of sterilization. Gamma rays won't make food radioactive. You will remember that gamma rays are high-energy photons. They interact with food, like milk, by killing harmful bacteria and other organisms that may be present. This gives food a longer shelf life. Exposing something to gamma rays doesn't make it radioactive, since gamma rays cannot add or remove a neutron or proton from the nucleus. The radiation is in the form of high-energy particles which pass through the substance. So the radioactivity can't cling to the food in any way. Many people worry that the irradiated foods are chemically altered in such a way as to be dangerous. But this concern is ill-founded. Question 8. Radioactive alpha emitters are relatively harmless outside the body, but can be dangerous if ingested or inhaled. Explain. क्वेश्चन 8 में है कि अल्फा पार्टिकल हमारी बॉडी के अगर आउटसाइड है तो फिर इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर उसको हम इनहेल कर लें या पानी में पी लें तो फिर वो नुकसानदेह है।
क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल है, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, इसलिए ये हमारी स्किन से रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको सांस के ज़रिए इनहेल कर लें या किसी कंटेमिनेटेड वाटर में इसको यूज़ कर लें, तो फिर ये हमारे इनसाइड जो है वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये हाईली आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। ये हमारे सेलुलर लेवल और जेनेटिक लेवल पे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, यानी हमारे सेल को डैमेज कर सकता है और हमारे जीन्स में तब्दीलियां ला सकता है। Answer. Alpha particles consisting of 2 protons and 2 neutrons. Alpha particles are relatively large in atomic terms. They are generally emitted from the decay of only the heaviest radioactive nuclei, such as uranium, actinium and radium. Although very energetic, and high in ionizing properties, the weight and size of alpha particles means they lose their energy over relatively short distances, and can easily be stopped by a layer of paper or human skin. As such, external, bodily exposure to alpha radiation carries little risk to health. However, if somehow inhaled or ingested, alpha particles can cause highly focused ionization, releasing all their energy just across a few cells and causing severe damage at both cellular and genetic level. This makes alpha particles possibly the most dangerous form of radiation. Question 9. If nuclear radiation is harmful, how it can be used for treatment of diseases? Question 9 है, अगर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है तो फिर हम इसे डिजीज़ के लिए क्यों यूज़ करते हैं? डिजीज़ के लिए इसको जब यूज़ किया जाता है तो एक तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, और वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, यानी सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है या डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जाता है जिस टिश्यू को हटाना हो, जिस टिश्यू को ख़त्म करना है। बाकी बॉडी को बड़ी एहतियात से उससे बचाया जाता है। इस वजह से ये इंसानी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के डिजीज़ेस का इलाज किया जाता है। Answer. We know that radiation can damage or kill cells in our body. But, like damage done by many other things, when this damage occurs in small amounts, our bodies are very good at repairing it, with very little chance of any long-term harm. When doctors treat cancer with radiation, they use very large doses, thousands of times higher than background radiation, and it's received in a short period of time. Radiation is concentrated on the infected tissue. The idea is to kill the tumor cells, and try to keep the dose to the rest of the body reasonably low. Secondly, those radioactive isotopes are used which have short half-life to minimize the radiation dose to the patient.